चलो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तो आइडिया है ना बेटा, L is equals to I omega for rotation and for a particle to moving translation L is equals to mv into your r, ठीक है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लीजिए बेटा। मान के चलो ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट है मेरे पास, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर एक पार्टिकल जिसका मास है मेरे पास 5 kg और दिस इज एट कोऑर्डिनेट 3,4 and it is moving in the positive x-axis with a velocity of मान के चलो 4 मीटर पर सेकेंड और ये इसका हो गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। सो ये हो गया मेरे पास y एक्सिस और ये हो गया मेरे पास x एक्सिस। बात करते रहे तो मुझे निकालना क्या है, we need to find the angular momentum of this object about the origin। मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखो find angular momentum, find angular momentum of object about origin, about origin, done। Find angular momentum of the object about the origin। देखो बेटा मेरे पास वेलोसिटी दे रखा है v is equals to 4 मीटर पर सेकेंड और उसका कोऑर्डिनेट्स भी दे रखा है, तो आप क्या करो, ये हो गया मेरा पॉइंट ऑफ योर एक्शन, isn't it? और ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, isn't it? So L is equals to your mv into your r लिख सकता हूँ बेटा, mv into your r, ठीक है ना। मास कितना है मेरे पास 5 kg, isn't it? Into velocity is nothing but 4 into position vector यानी y axis, y axis is also how much for me 4, isn't it? So what will be the answer beta? 5 4s are 20, 20 into 4, this will become for me how much value? 80। क्लियर है सभी को, आ गया। So it will be your 80 kg meter square per second, this will be the answer। Done beta, चलो next heading and very important, conservation of angular momentum, conservation of angular momentum, conservation of your angular momentum, ठीक है। बिल्कुल तरीका चलेगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है बेटा, मेरे पास सडनली स्टक हो गया कुछ। चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। किसी को याद है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? कंडीशन देख लीजिए बेटा, इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, if net torque acting on system is 0, then angular momentum is conserved, then angular momentum is conserved, angular momentum is conserved। मतलब नेट टॉर्क अपना 0 होना चाहिए, isn't it? If tau external is becoming from a 0, which is a torque quantity, अगर नेट टॉर्क 0 है, tau is equals to, we know the formula, tau is equals to I alpha, isn't it? So tau is equals to your I into your, sorry, angular momentum का formula लिख दो, नहीं तो L is equals to your tau is equals to R into your alpha, and as L is equals to
क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? L is equals to your I into your omega. ठीक है ना? If net torque acting on the system is 0, isn't it? So what will be the value of alpha beta? Alpha की value तो 0 हो जाएगी, isn't it? So tau can also be written as torque can be also written as of your I into alpha, isn't it? That alpha 0 हो गया तो tau 0 हो जाएगा. यानी angular momentum is said to be conserved or may be written and say for example constant. So L is equals to your constant. Done beta? Because rate of change of angular momentum is also called as torque na beta. d omega by dt will be your alpha. अगर alpha 0 हो गया तो torque भी 0 हो जाएगा ना. So that is the reason angular momentum of the system is becoming for me constant. So L is equals to your constant. L is equals to your constant मतलब क्या हो जाएगा? I1 omega 1 will be equal to I2 into your omega 2. If net torque acting on the system is 0, then angular momentum is said to be conserved. Conserved का मतलब constant. Initial जितना रहेगा final भी उतना ही होगा. Clear है? यानी इसके अंदर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ, ओमेगा 1 विल इंक्रीज. अगर I2 इंक्रीज हो रहा है, ओमेगा 2 विल डिक्रीज. डन बेटा? So if net torque acting on the system is 0, then angular momentum is said to be conserved. क्योंकि मैंने टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पर देखो ऐसे भी लिखा था, tau is also equal to your I into alpha. Tau is equals to your R into your F. Tau is also equal to your I into your alpha. डन बेटा? छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको. मान के चलो मेरे पास एक डिस्क है. This is your disk. और डिस्क पे ये इसका एक्सिस, सॉरी, मूविंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, और जिसका रेडियस है मान के चलो कैपिटल आर. मैंने क्या किया, एक एंड पे एक पार्टिकल रख दिया इस तरह से, विच इज द डिस्टेंस ऑफ योर आर. दिस इज योर मास एम. तो ये स्टिक कर जाएगा इसको थोड़ी देर के बाद. तो ये मेरे पास क्या है, डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर. स्मॉल एम रखने से पहले इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है बेटा. जैसे मैंने एक ग्रीन कलर का मास उसको अटैच करवा दिया या उसके ऊपर रख दिया तो उसको स्टिक हो गया, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ये अपने को निकालना. दैट मींस व्हाट इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. फाइंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. फाइंड द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, चलो देखो. I told you that there is no external force acting on that one. यानी कोई भी external torque नहीं लग रहा है यहाँ पर, isn't it? Because internally stick होने की वजह से इसकी velocity change हो रही है. So can I say that initial angular momentum must be equal to final angular momentum? So it is nothing but of your I1 omega 1 will be equal to I2 omega 2. I1 is nothing but moment of inertia of the disk passing through center and perpendicular to the plane, mr square by 2. Initial angular velocity omega naught है. I2 की value बेटा, see when small m has been kept, now I can apply the parallel axis theory में यहाँ पर. So this will become for me your m into your r square divided by 2 plus of your small m into your r square. इसको final angular velocity हो गई मान के चलो ओमेगा डैश. ठीक है ना? अब इसको फाइनलाइज कर लो and try to simplify the problem, so we'll get the answer for that one. So omega final will be equal to your mr square omega naught divided by
m फाइनल निकालना है ना बेटा, ये तो 2 इधर आ जाएगा, तो दिस विल बिकम फॉर मी m into your r square प्लस ये बन जाएगा 2mr square। तो डिवाइड किया मैंने, डिवाइड 2 से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सो ये इसमें से आर स्क्वायर भी फिर चले जाएगा, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर भी चले जाएगा। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू योर m into omega naught divided by capital M plus of your 2 times of small m. This is the final angular velocity. Clear है? ये बात समझ में? ऐसा वाला और एक प्रॉब्लम करोगे? चलो ये प्रॉब्लम ट्राई करो। सेम मान के चलो एक डिस्क है मेरे पास, आप लोग ट्राई करो एक बार जल्दी से, ठीक है ना। और ये हो गया इसका कुछ मास है इस तरह से, और ये हो गया इसका एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मैंने क्या किया, एक छोटा सा मास यहां से ड्रॉप किया हुआ है, इसका मास है m एंड विच इज बीन ड्रॉप्ड हियर राइट नाउ, इस तरह से, यानी यहां से यहां तक इसकी दूरी हो गई r/2 और ये हो गया कैपिटल R, ठीक है ना। इज इट क्लियर? सो फाइंड द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। फाइंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क। चलो ट्राई करो। सेम है बेटा, ये तो डिस्क ही है जिसका मास है कैपिटल M और रेडियस है कैपिटल R। ट्राई करोगे जल्दी? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मान के चलो मैं दे रखा हूं ओमेगा नॉट, अब ट्राई करो। सेम as no external force is acting on this body, यानी no external torque है, तो initial angular momentum will be equal to final angular momentum, यानी I1 omega 1 will be equal to I2 omega 2। I1 हो गया mr square divided by 2 into your omega naught, that is equals, ये हो जाएगा mr square, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को लगा रहा हूँ, प्लस स्मॉल m। अब यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इससे पहले r था, अब यहाँ पर r/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा into your omega final। ये हो गया आंसर इसका, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसमें से आर स्क्वायर निकाले तो वैसे भी आर स्क्वायर पूरे जगह कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, तो आर स्क्वायर यहाँ चले गया, इसमें का आर स्क्वायर चले गया, इसमें का आर स्क्वायर चले गया, ठीक है ना। तो इट इज m ओमेगा नॉट हो गया राइट ना। तो सिंप्लीफाई कर लो, इसमें क्या हो जाएगा देखो, कुछ जा रहा है क्या देख लो बेसिकली, ये बन जाएगा मेरे पास m ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 is equals to, इसका अगर मैं LCM ले लो, this will be equal to 2 times of capital M plus of your small m divided by 4 into your omega final, ठीक है ना। Is it clear? ये 2 1 में चले जाएगा, 2 2 में चले जाएगा, ठीक है ना। ओमेगा फाइनल निकालना अपने को, तो ओमेगा फाइनल कितना बन गया बेटा, बोलो कितना बन गया, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू 2 इधर चले जाएगा, 2m ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m। दिस विल बी द आंसर। ऐसे वाले क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं बेटा, इतना ही बेसिक अपने को लगाना है ऐसे वाले क्वेश्चंस करने के लिए। थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी में से, थोड़ा निकाल के एक बार एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स अगर इस टॉपिक पे कर लोगे ना, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द रोटेशन इज ये फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने का तरीका, ठीक है बेटा। क्लियर बेटा? और एक एग्जांपल करा रहा हूँ, विल गेट अ क्लैरिटी स्टिल। मेरे पास एक डिस्क है, जरा सोच के समझ के करना, अच्छा वाला क्वेश्चन। सेम डिस्क है, ये इसका एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और यहाँ पर एक इंसेक्ट है, दिस इज योर इंसेक्ट। कितनी दूरी पे है बेटा, ये हो गया इसका डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट r। इनिशियली इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है व्हेन इंसेक्ट इज एट द पेरिफेरी, एंड दिस वन इज राइट नाउ फॉर मी डिस्क of mass capital M and radius capital R।
ठीक है ना। मास ऑफ द इंसेक्ट है मान के चलिए स्मॉल m, ठीक है ना। सो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। इनिशियली insect was on periphery and started crawling towards center. What we need to calculate is find the omega of disk, मतलब angular velocity when insect reaches center. When insect reaches center. चलो ट्राई कर। Can anyone try it? Initially, insect is on the periphery and started crawling towards the center. Find the angular velocity of the disk when the insect reaches the center part of relation. Anyone? देखो बेटा इंसेक्ट जाने से पहले से इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताइए बेटा। आई इंटू योर ओमेगा, आई विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर। ऑलरेडी स्मॉल एम कैपिटल एम है ना बेटा, इसलिए और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना ओमेगा नॉट, यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो यहाँ पर थोड़ा मैं कैलकुलेशन कर दूँ इसको सीधा सीधा, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल एम प्लस ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ योर स्मॉल एम डिवाइडेड बाय योर 2 पार्ट ऑफ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। आर स्क्वायर मैं कॉमन ले रहा हूँ बेसिकली यहाँ पर, ठीक है ना। सो इट इज 2m डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये हो गया मेरे पास आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट। कितना लिख सकता हूँ? डन बेटा। फाइनल सिचुएशन में क्या हो जाएगा? When the insect is coming towards the center, ये डिस्क था, अभी यहाँ पर ये इसका एक्सेस है। Now final moment of inertia will be equal to how much बेटा? m into your r square divided by 2 plus small m। स्मॉल m यहाँ पर था इससे पहले, अभी सेंटर पे चले गया, यानी r की वैल्यू 0 बन गई, यानी फाइनल एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ओनली mr square by 2, यानी l फाइनल विल बी इक्वल टू योर mr square डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हो गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल। सो नाउ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, यानी कैपिटल M प्लस 2m into your r square into omega naught divided by 2 is equals to m into r square divided by 2 into omega final। ये r square और ये r square गेट कैंसिल, और ये 2 और ये 2 भी यहां से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इससे कुछ डाउट है? तो ओमेगा फाइनल कितना बन गया बेटा? ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस 2m into your ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल A। आया? डाउट टू एनीवन? वैसे वाले क्वेश्चंस कर लोगे ना। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होगा? नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू 0, देन एंगुलर मोमेंटम इज सेड टू बी कंजर्व। क्लियर है सभी को? इसमें मैं और प्रॉब्लम्स कराऊंगा बेटा, आप लोग पहले इसका कॉन्सेप्ट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट के साथ मैं एक दो एग्जांपल करा रहा हूँ सो दैट आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। क्लियर है?
चलो क्वेश्चन देख लो बेटा। A thin circular ring of mass capital M and radius r is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. ठीक है। Four objects each of mass m are kept gently to the opposite ends of the two perpendicular diameters of the ring. The angular velocity of the ring is how much? ये देखो बेटा, मासेस रखने से पहले इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा? इनिशियल है ओमेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू हाउ मच? m into your r square. रखने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाएगा बेटा? I final will become how much बेटा? m into your r square, small r square है ना, so this will be equal to your small r square plus this is 4m into your small r square. तो इसमें से कैपिटल M प्लस 4m into small r square, ये हो गया फाइनल, ठीक है ना। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल. As no net torque is acting on the system, so angular momentum is conserved. So initial angular momentum must be equal to final angular momentum. Initial angular momentum मतलब I into omega ना बेटा, I is equals to mr square into omega, that is equals to capital M plus 4m into r square into omega final. Simplify कर लो, that will give me the answer. बात क्लियर है? हमें क्लियर विद दिस वन? हमें क्लियर बेटा? चल, सो एक पार्ट हो गया. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द रोटेशनल मैकेनिक्स, दैट इज रोलिंग. Concept of rolling motion. Concept of rolling motion. ठीक है. रोलिंग मोशन मतलब बेटा, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज, मैं ब्रैकेट में भी लिख रहा हूं देखो, combined translational and rotational motion. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर बेटा. इसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे पूरे चैप्टर्स के, एक बार फॉर्मुलेस एक बार लिख लेके, देन वी स्टार्ट डूइंग द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस. ठीक है ना. रोलिंग मतलब जिसके पास ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है. जैसे कोई बच्चा मान के चलो रोल करता है, जैसे ड्रम अगर आप एक रोड के ऊपर अगर धक्का दोगे तो सामने भी जाएगा, रोल भी रोटेट भी करेगा. तो रोटेटरी प्लस ट्रांसलेटरी, दैट बोथ मोशन इज कॉल्ड एज ऑफ योर रोलिंग मोशन. ठीक है ना. रोलिंग मतलब सामने भी जाना चाहिए और रोटेट भी होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ योर रोलिंग. ए कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड एज ऑफ योर रोलिंग मोशन. क्लियर है? मैं आपको थोड़ा डायग्राम के हिसाब से समझा दूं. देखो बेटा, दिस इज योर ट्रांसलेटरी मोशन. प्लस एक रोटेटरी मोशन, दोनों को ऐड कर रहे हो, देन विल बी गेटिंग रोलिंग मोशन. देखो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, ईच एंड एवरी पार्टिकल विल बी मूविंग विद सेम सेंटर ऑफ मास. यानी इसके पास v होगा, इसके पास भी v होगा, ये दो डाउन पार्टिकल है ना, इसके पास भी v होगा, यहाँ पर एक पार्टिकल है, इसके पास भी v होगा, इसके पास भी v होगा, इसके पास भी v होगा. Each and every particle in translatory motion will be having same angular velocity. जितने भी पार्टिकल जो भी डायरेक्शन में लोगे ना, that all of them are acting in the same direction. बात क्लियर है सभी को? था अब देखिए रोटेटरी मोशन में क्या है, एट द सेंटर इसकी वेलोसिटी 0 होती है और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होती है v.
और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होती है v डाउन, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होती है, रोटेट कर रहा है ना, डायरेक्शन चेंज होगा, ये हो गया v और ये हो गया v इस तरह से। देखो ये पार्टिकल ये है और ये पार्टिकल b है, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं यहाँ पर a प्लस b यानी v प्लस v दैट विल बी इक्वल टू 2v। सेंटर के पास अगर जोड़ रहा हूं मैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा v प्लस 0 यानी इसके पास सिर्फ v आ जाएगा। यहाँ पर देखो बेटा सामने v था पीछे भी v था, दोनों कैंसिल हो जाके कितना आ जाएगा 0, यानी इन प्योर रोलिंग एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, सेंटर पे v होगा और एट द टॉप मोस्ट पोर्शन इट विल बी 2v। बात क्लियर है सभी को? am I clear with this one? am I clear? Pure translatory motion में every particle will be having same velocity. In a in the pure rotatory motion सेंटर के पास जैसा फैन है मान के चलो, फैन सेंटर का एक्सेस क्या हो जाएगा बेटा, रेस्ट पे रहेगा ना बेटा। तो आपका पंखा देखो, सीलिंग का पंखा जो जहां लटक रहा है उसकी तो वेलोसिटी 0 है, लेकिन उसके चारों तरफ जो ब्लेड्स है दैट आर रोटेटिंग, ठीक है ना। ट्रांसलेटरी मतलब आप मूव करना, जैसे मान के चलो आपके क्लास में से आप अंदर आ रहे हो बाहर आ रहे हो तो आपका ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज मूविंग इन द सेम वेलोसिटी। जैसे मान के चलो आपका हाथ की वेलोसिटी 10 है तो आपकी बॉडी भी वेलोसिटी 10 होगी, आपके कान का भी वेलोसिटी 10 होगा, आपके पाँव का भी वेलोसिटी 10 होगा, यानी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, isn't it? So in translatory motion each and every particle will have same, whereas in the rotatory center के पास 0 होगा। इन दोनों को क्लब करेंगे तो हम लोग रोलिंग मोशन मिलेगा। रोलिंग में हाईएस्ट पोजीशन वेलोसिटी 2v होगी, सेंटर पे v होगा एंड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v है, इसकी वेलोसिटी v है, तो इट इज v minus v that will be equal to your 0। क्लियर है? Is it clear? Any doubt to anyone? अब देखो आप लोग को ये तो मालूम है इट इज रोलिंग, v की वैल्यू क्या लिखोगे आप, r इंटू ओमेगा, यहाँ की v वैल्यू क्या लिखोगे, r इंटू ओमेगा, यहाँ की v वैल्यू क्या लिखोगे आप, r इंटू ओमेगा, और यहाँ की v वैल्यू क्या लिखोगे, r इंटू ओमेगा, रोटेशन के लिए, ठीक है ना। हो गया 2 मिनट, मैं मान के चलो आपको और थोड़ा बहुत डिटेल में करा दूं। ये देखो एक है, इसको अटैच कर रहा हूँ तो अपने को रोलिंग मिलेगा, यानी यहाँ पर अगर v है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, r ओमेगा होगा, तो इस पॉइंट पे क्या बन जाएगा बेटा, v प्लस r ओमेगा। इस पे यहाँ पर v है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर बनेगा v प्लस 0 यानी 0 सॉरी दैट विल बी इक्वल टू v, और यहाँ पर है v और यहाँ पर है r ओमेगा इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनेगा v माइनस r ओमेगा। आई होप यू गॉट एन आइडिया, एवरीथिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन, ठीक है। Any doubt to anyone? इतना आप बेसिक याद रख लीजिए, इसका और डिटेल में हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे। आप लोग प्लीज थोड़ा पीवाईक्यूज खत्म करिए ऑन एंगुलर मोमेंटम कंडीशन पे। मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होगा बेटा, इफ नेट टार्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, इफ नेट टार्क एक्टिंग ऑन सिस्टम इज 0 देन एंगुलर मोमेंटम इज सेड टू बी कंजर्व, यानी टार्क 0 होगा तो अल्फा की वैल्यू भी 0 होगा, क्योंकि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा है ना बेटा, तो अपने के पास L इज इक्वल टू आई अल्फा में angular momentum is said to be constant because moment of inertia and omega are remaining for me constant, यानी L is equals to constant मतलब I1 omega 1 is equals to I2 omega 2। इसका मैंने 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसको अच्छी तरह से एक से दो बार करो, रिकॉर्डिंग में भी देख लो, देन उसके बाद आप थोड़ा एक दो प्रॉब्लम्स कर लो उसके पीवाईक्यूज निकाल के। देन रोलिंग में बस इतना याद रखना है, ट्रांसलेटर और रोटेटर को दोनों को ऐड कर रहे हैं तो विल बी गेटिंग द रोलिंग मोशन। तो उस पे थोड़े केसेस है, बहुत अच्छे वाले केसेस है, जहाँ टाइम निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, इंक्लाइन प्लेन पे डिफरेंट कंडीशंस पे जो वहां पर रेगुलरली फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं फॉर द नीट एंड जेईई मेंस के लिए भी, वो हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कल मॉर्निंग एज यूजुअली क्लास हो जाएगी बेटा आप लोग की, ठीक है। और वेरी सून वी आर गोइंग टू टेक द पेड वर्जन्स बेटा, तो आपकी पूरी क्लास जरा लॉन्ग में जाएगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट वंस वी टेक दैट वन देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी तो थोड़ा टाइम का लिमिट है, देन वंस वी गेट इट आउट विल ट्राई टू गो इट आउट, ठीक है ना। सुबह हो आप
कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कत हो रही है तो यू कैन टेक्स्ट में डायरेक्टली बेटा, सो इफ आई नीड टू गो इन सम अदर बेटर वे आई कैन हेल्प इट आउट, क्योंकि कॉन्सेप्ट एंड क्लैरिटी